हेलो गाइस, मैं आप लोगों को आज कुछ सुनाना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे असम का सीएम यानी कि हम लोगों का मामा, हमारे सीएम को हम लोग मामा बोलते हैं। देखिए, अच्छा वाला बात बोले हैं। आज जाति को फर्क समझते हैं असम का लोग। मामा नहीं समझते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं समझते हैं, सबको एक बराबर देखते हैं। सुनिए। तो অসমত এজন বিহাৰী অসমীয়াৰ কাজিয়া লাগিলে গোটেই বিহাৰী জাতিটোক টানি আনা, অসমীয়া জাতিটোক টানি আনা, এইটোতো কোনো কাৰণে সমৰ্থনযোগ্য নহয়। তেওঁ যদি মিটিং কৰি যে মই সকলো বিহাৰী ৰাইজৰ হৈ এই কাজিয়াখন কৰিছোঁ, তেতিয়া বেলেগ কথা। কোনোবা এজনৰ উপাধিটো তিৱাৰী হ'লে তেওঁ গোটেই হিন্দীভাষী মানুহৰ প্ৰতিনিধি বুলি কেনেকৈ গম পোৱা যায়? এইবিলাক কৰিলে কি হ'ব? আমাৰ আজি আপোনালোকে এইটো জানি ল'ব যে অসমত যিমান হিন্দীভাষী থাকে তাতকৈ বেছি অসমীয়া ল'ৰা বাহিৰত থাকে। এই কথাবিলাক আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকসকলে আপোনালোকেও এইবিলাক লিখালিখি কৰে। যদি ভাৰতৰ মানুহে কয় যে আপোনালোকৰ 25 লাখ মানুহ ঘূৰাই লওক। आज सीएम पक्का वाला बात बोले हैं। अगर बिहारी आदमी असम में ना होना तो आसामीज लोगों को एक ही दिन में मार के फेंक देने वाला लोग तैनात है।